अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्टीम इंटरनेशनल। एंड एज यू नो, जो बुक हम कर रहे हैं वो है मैथ्स फॉर अर्ली लर्नर्स। और अब तक हम नंबर्स के साथ बहुत से इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। आज का जो हमारा लेसन है वो है अबाउट काउंटिंग, ऑल अबाउट काउंटिंग। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, हम तमाम नंबर्स को लिखना सीख चुके हैं। अब हमने उन नंबर्स को आगे टेंस एंड यूनिट से रिलेट करते हुए 20 से ऑनवर्ड्स 100 तक काउंटिंग सीखनी है। क्योंकि काउंटिंग जो है इट इज रेपिटिशन। नंबर्स जो है वो रिपीट होते हैं। जैसे हमने टेंस की फैमिली देखी 1 10 और सिर्फ यूनिट्स चेंज हो रहे थे, राइट। अब हम 20s की फैमिली देखेंगे, 30s की देखेंगे, 40s की एंड अप टिल नंबर 50 एंड देन वी विल सी सम टेंस और फिर हम काउंटिंग करेंगे 100 तक। तो हमारा आज का जो लेसन है वो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इट्स ऑल अबाउट राइटिंग काउंटिंग। तो हम जल्दी से चलते हैं अपनी बुक की तरफ। तो हियर कम्स द फर्स्ट पेज, नंबर्स 21 till 30। यहाँ पे द क्वेश्चन सेज काउंट एंड रीड द नंबर्स फ्रॉम 21 to 30। मेरे प्यारे बच्चों, हमने तमाम नंबर्स को विद रिस्पेक्ट टू टेंस एंड यूनिट्स रीड करना है, उसके बाद इसको लिखेंगे हम। सो हियर 21, 2 tens and 1 unit, 21. 2 tens and 2 units makes 22. 2 tens and 3 units make 23. 2 tens and 4 units 24, 2 tens and 5 units 25। Here my dear kids, आपने इन तमाम नंबर्स को ट्रेस करते जाना है और उसके बाद 2 times आप इनकी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे इन दीज ब्लॉक। हम आगे चलते हैं। 2 tens and 6 units 26, 2 tens and 7 units 27, 2 tens and 8 units 28, 2 tens and 9 units make 29 and 3 tens makes 30। यानी कि 20s की फैमिली भी हमने कर ली है, which is going to end on 30। And as I have told you कि 30 में units की जगह 0 है, it means 3 tens are going to make 30। On the next page, we are going to do the same thing. We are going to count and read the numbers from 31 to 40. So 3 tens and 1 unit, 31. 3 10 and 2 units make 32. 3 tens and 3 units, 33. 3 tens and 4 units, 35. 3 tens and 5 units make 35. 3 tens and 6 units 36. 3 tens and 7 units 37. 3 tens 8 units 38. 3 tens 9 units 39. And 4 tens are going to make 40. So you are going to trace these numbers and then you are going to write 2 times over here. The next is the same thing with 41 to 50. Count and read the numbers from 41 to 50. 4 tens and 1 unit, 41. 4 tens and 2 units, 42. 4 tens and 3 units, 43. 4 tens and 4 units, 44. 4 tens and 5 units, 45. 4 tens and 6 units, 46. 4 tens and 7 units, 47. 4 tens and 8 units, 48. 4 tens and 9 units, 49. And 5 tens are going to make 50. So trace these numbers and after that write them 2 times. On the next page, my dear kids, it is saying T numbers. T numbers हम उन numbers को कहते हैं जो कि end होते हैं T पे, means they are tens, like 20,
2 tens make 20. 3 tens makes 30. 4 tens makes 40. And 5 tens makes 50. Have you observed that all these numbers are ending on T? Yes, that is why these numbers are called as T numbers. यहाँ पे आपने 20, 30, 40 और 50 इनको ट्रेस करना है and then you have to write them 5 times over here. There is a little point for teachers. Help and guide the students to count the tens, trace and write T numbers in correct number formation. Use visual aids like number cards for 20, 30, 40 and 50. Encourage them to count numbers as group emphasizing the T numbers. जैसे मैंने T numbers को emphasize किया है, आप भी उन्हें बताइए that why these tens are called as T numbers. And यहाँ पे we have the last page dedicated to counting. Here you have to write the counting numbers from 51 till 100. Yes, you have to trace starting from 51, then 60s families, 70s, 80s, 90s, and here you have to end on the biggest number, the 100. Instructions for teachers. Dear teachers, आज का लेसन था dedicated to counting. मैंने 20 से लेके 50 तक की काउंटिंग बहुत ही डिटेल से with respect to tens and units बच्चों को समझाई है. आप उनको भी मैथ्स करवाते वक्त जो बच्चे जल्दी काम खत्म कर लें, आप ज़रूर उन्हें टेंस एंड यूनिट्स की प्रैक्टिस करवाया कीजिए विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. यू कैन यूज़ एबेकस, यू कैन यूज़ टेंस फ्रेम, यू कैन यूज़ ब्लॉक्स. आप किसी भी तरह टेंस एंड यूनिट्स के कॉन्सेप्ट को रीइंफोर्स कर सकती हैं. स्कैन द QR कोड, कम ऑन टू दिस वीडियो ताकि वो काउंटिंग पहले 20 से 50 तक और फिर 50 से 100 तक अच्छे से सीख. इंस्ट्रक्शंस फॉर पेरेंट्स. डियर पेरेंट्स, आज का लेसन था काउंटिंग के बारे में और विद रिस्पेक्ट टू टेंस एंड यूनिट्स. टेंस एंड यूनिट्स के कॉन्सेप्ट को काउंटिंग में इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है. उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. अगर हमारे पास कोई भी 2 डिजिट नंबर है तो उसमें कितने टेंस और कितने यूनिट्स प्रेजेंट हैं. आई होप बच्चों को काउंटिंग अच्छे से समझ आ गई होगी और वो इंडिपेंडेंटली काउंटिंग कर सकेंगे. और आप उनको इनकरेज करें कि वो घर पे भी काउंटिंग की प्रैक्टिस करें. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन और हमने सीखी है काउंटिंग. अब हम जंप करेंगे नए नए कॉन्सेप्ट्स की तरफ. आज हमारा आखिरी लेसन था विच वॉज रिलेटेड विद काउंटिंग. आप घर में काउंटिंग ज़रूर प्रैक्टिस किया कीजिए ताकि काउंटिंग आपकी फ्लुएंट हो जाए. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन और हम दोबारा मिलेंगे एक नए लेसन के साथ, एक नए एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट के साथ. तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.